that is psychodynamic counseling, right? Like, who is given this psychodynamic counseling or psychoanalytic theory of counseling? जैसे हम psychoanalysis भी बोलते हैं, psychoanalysis और psychodynamic counseling. Any idea about psychoanalysis? Sir Or Sigmund, Sir Sigmund Freud. okay, it is associated with Sigmund Freud. Anything else apart from this? Sir, he told about three theories: psychosexuals, conscious mind, subconscious, unconscious. Okay. और कुछ पता है इसके बारे में, साइकोएनालिसिस के बारे में किसी को? नहीं, कोई आइडिया नहीं है. Okay, so basically Sigmund Freud, who was a very much famous neurologist of his own time, uh, he considered as a father of psychoanalysis theory, and he also one of the pioneer in psychology. And he only developed the psychoanalytic theory and psychodynamic therapy. और जो इनकी थ्योरी थी साइकोएनालिटिक थ्योरी, और यू कैन से दैट साइकोएनालिटिक थ्योरी was the first psychological theory which was widely accepted in the Europe and America at that time. And his work influenced several psychologists, therapists across the globe who were working in the field of psychotherapy and counseling. हालांकि बाद में और थेरेपिस्ट भी हुए, लाइक साइको आपके कार्ल यूंग, एना फ्रॉयड, एरिक एरिक्सन, सुलिवियन, those who were practiced psychoanalysis, जिसे हम न्यू फ्रॉडियन के नाम से भी जानते हैं. इन्होंने क्या बताया था साइकोएनालिसिस में, कोई आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है साइकोएनालिसिस के बारे में? क्या, हाउ ही डिस्क्राइब द ह्यूमन नेचर? चलिए ह्यूमन नेचर के बारे में बात करें. हाउ ही डिस्क्राइब द ह्यूमन नेचर? According to the Freud, our human nature is basically a deterministic or determined by the unconscious motivation, irrational forces, sometimes our biological things, sometimes it might be determined by our instincts or instinctual drive, or sometimes psychosexual activities during the first 6 years of life. And there are many internal conflicts of an individual during these first 6 years of life. And he also talked about the psychic energy, which is called libido, and aggressive impulses. If the both the things repressed during the first 6 years of life, then definitely it will create a problem in the later life, as per the Freudian perspective. सो एज पर द फ्रॉइड, ये जो आपकी साइकिक एनर्जी है या आपके एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं, बेसिकली दे were allowed to become conscious and produce extreme anxiety.
अभी किसी ने कहा था कि like it also talked about the explain the human nature in terms of conscious mind, pre-conscious mind and unconscious mind. कॉन्शियस माइंड क्या है? सर जिन चीजों के बारे में हम अभी अवेयर हो, दोज थिंग्स वी अवेयर नाउ। Okay, yes, the conscious mind basically enacts reality with the outside world. And what about the pre-conscious mind? जिसके बारे में अभी नहीं पता है, बट अगर हम ट्राई करें तो पता चल जाए। जैसे नाउ अगर हम बिजी हैं, वी स्टडी, बट समवन कम एंड आस्क मी व्हाट इज योर फादर नेम, एंड आई सडनली रिमेंबर दैट इज रिलेटेड टू प्रीकॉन्शियस। So basically आपका जो pre-conscious mind है that operates between the conscious and unconscious mind, and it has two aspects of the two minds, conscious and unconscious. And unconscious part जो है वो जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है. And as per the Freud, आपका जो like within the pre-conscious mind we are buried our memories of forgotten life, and sometimes we try to recollect, or we can recollect with the help of therapies. सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ बोला है. एनी आइडिया व्हाट ही मेंशन्ड अबाउट पर्सनालिटी? So he also introduced the ego and superego about the personality. राइट, व्हाट इट इज? सर इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो इज बेसिकली बेस्ड ऑन रियलिटी, और सुपर ईगो इज बेसिकली बेस्ड ऑन मॉरलिटी। ओके, एनीवन वांट टू काउंटर इट? किसी को और कुछ कहना है इसके बारे में? According to him, it is the unconscious part of our mind, and ego involves the conscious part of mind. राइट. Or is I think, combination of both. Okay, some part of consciousness and some Some major of unconsciousness. major Yes, part sir. of unconsciousness. Okay. Sigmund Freud also talked about the structure of this one psychosexual development of stages. सिगमंड फ्रॉइड ने बात की है. Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही है, बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर सिगमंड फ्रॉइड गिव ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, latency stage, genital stage. Right. So basically, oral stage during the first year of life, when the newborn babies completely depend on the others for the satisfaction of all the needs. And during this stage, the body pleasure is entirely centered on the mouth. And what? Okay. Anal stage. This is the second year of life. जहाँ पे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है. Sir, phallic. देन फेलिक स्टेज. ओके, फेलिक स्टेज में क्या होता है? सर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस. सर वो तो लेटेंसी में आता है. नहीं, वो फैलिक फेलिक का ही फैलिक पार्ट है. स्टेज। इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ फेलिक स्टेज ओनली. सिगमंड फ्रॉइड ने इसको ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ही बोला इस स्टेज को. देन लेटेंसी स्टेज.
Sir, does it happen that in some stage the child is more connected to the mother if he is a male child, and female kids are more attracted towards their Father father's side. side? Right. Does it come in phallic stage only? Yes, yes, yes. Pelling stage. Oedipus electra complex. Okay, sir. ओके सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड मेजर जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यही होती हैं मतलब ऑल दिस स्टेजेस इफ द आपके जो बच्चे के इम्पल्सेस है या बच्चे के रिप्रेस्ड इमोशंस है अगर या उसकी डिजायर्स है इफ he or she is not able to satisfy that then it have a tendency to produce extreme anxiety in the later stage. Hmm? Or maybe you can say the childhood traumas. Hmm? Sometimes childhood trauma may lead to the later psychopathological behavior or sometimes psychopathology. So to overcome from all these problems, so Sigmund Freud also talked about the different techniques of psychodynamic therapies. So basically, it is believed that gaining insight into such repressed material या आपके repressed emotions या आपके unconscious thoughts can free the individual from pain and the shame which is associated with that emotions. So people who are practicing the psychodynamic therapy or psychoanalysis techniques, so they tend to follow certain techniques. कौन सी टेक्निक है? Any idea? Like free बोलिए. Yes, sir. The techniques is like dream analysis, free flowing, and free association, and like Freud also used to hypnotize the people to know their problems. Hypnotize को. Yeah, sir, he used to hypnotize the people to to go into the unconscious, so that the people can go into their unconscious mind and to tell the problems. And कहीं ना कहीं सर जब उसने ये प्रॉब्लम को वो एनालाइज करता था मतलब तो उसने देखा कि जो 5 स्टेजेस से कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम है वो चाइल्डहुड से ही मतलब ऊपर की तरफ जाती है, यंग एज की तरफ या एडल्ट एज की तरफ जाती है, और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन्हीं चीजों से जो हमने 5 स्टेजेस में पढ़ा है इन्हीं से रिलेट हो रही थी. सो बेसिकली उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है सिगमंड फ्रॉइड की, आप ये देखेंगे जो आपके जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इन्हीं स्टेजेस के दौरान इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू गेट his or her desired fulfill or maybe due to some reasons if he repressed his emotions impulses then those repressed emotions or unfulfilled desires or motivations may lead to the problematic behavior in the later life. So basically there are different techniques which is used by the therapist. That is, one is free association, dream analysis, जिसे हम analysis of dream भी बोलते हैं, analysis of resistance and transference analysis. Free association क्या है? What is free association? सर जब किसी पर्सन को अनकॉन्शियस थॉट्स के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाए. Okay, anybody else? Free association. The person is allowed to discuss freely what he thinks about a particular, say, a situation. Okay. Hello. Okay, sir. Sir, according like what the Freud has said, he free association is like a method of exploring the unconscious mind, in which the person is free to say whatever comes
to his mind, no matter it is very embracing, it is unimportant, but the person is the person is set free to say whatever comes in his mind. Yes, 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 yes. We can't hear you. So basically, free association is a technique where the client is simply asked to say whatever comes into his or her mind spontaneously without censoring it, or sometimes maybe like how much personal it is, how much painful it is, or how much shameful it is, or maybe sometimes how much irrelevant it is. जो भी उसके mind में आ रहा है, therapist asks him or her to just rent out his feelings. So basically in this technique, first of all, आपका जो client होता है या जो आप या patient के लिए, हालांकि patient तो नहीं बोलते, client, you need to make him comfortable, make him more comfortable and relaxed, in a relaxed position, and asked him or her to spontaneously share his thoughts and feelings as they are coming into his mind. तो फिर आप क्या करेंगे? Suppose if your client is sharing his thoughts, so what is your role as a therapist? Family, what you're saying, Huh? he's saying whatever he is saying and looking for anything that is not expected. Okay. Anybody else? I think to write down all the things what the client is saying, so that like later an interpretation can be done by the like counseling psychologist. Right, right. So as a therapist, you will put together all the client's verbalization into a meaningful perspective. And basically, you need to help him or her to gain the insight into the her's unconscious part of mind. Insight क्या होता है? What is insight? I'm using that word insight. Insight is like when sudden idea, sudden thought comes to the mind for the solution of a problem, like the eureka. Caller has given the word insight actually. Okay. Anybody else? What is insight? लाइक सर जब आर्कम डीज को आइडिया आया था ना, तो वो यूरेका कहता हुआ टब में से भाग गया, तो दैट इज इनसाइट. I think the sudden discovery of a correct solution. See, in psychology, insight is described as a self-knowledge. Basically, the understanding the significance and the purpose of one's own motives or own behavior. When you start recognizing the inappropriateness or irrationality in your own behavior, that is insight of yourself. आत्मचिंतन करना. तो बेसिकली जो आपका जो फ्री एसोसिएशन टेक्निक है, दैट विल हेल्प यू, और एज अ थेरेपिस्ट आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, है ना, दैट योर मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव विल हेल्प हिम और हर टू गेन इनसाइट his or her unconscious part. So as a therapist, your interpretations lead to the client towards
increased awareness and understanding of one's unconscious and its relationships to the experienced distress. I would say, as a therapist, this is your role, how you make him realize where you are irrational or inappropriate. And once the client is start gaining the insight, so that will help him or her कि वो कहाँ गलत था और किन चीजों की वजह से उसको डिस्ट्रेस हो रहा था या एंजाइटी हो रही थी. दैट इज फ्री एसोसिएशन. ठीक है, क्लियर है फ्री एसोसिएशन. सेकंड है एनालिसिस ऑफ ड्रीम. एनालिसिस ऑफ ड्रीम मीन्स Fred, as a Freud mentioned that dreams are the royal road to unconscious. हाँ, ये जो ड्रीम्स हैं बेसिकली वो हमें हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स को या अनकॉन्शियस माइंड को या अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ जो पर्सनालिटी है ना उसको दर्शाते हैं. Yes, sir. And Freud also said that dreams serve us as a very important tool to find the problem from the unconscious mind. And he has developed his this theory, the theory of like dreams. Like it was totally based on his own like theory. Like he was treating once a patient named Irma and Ilma. So he was very thoughtful ki why Ilma was not recovering. He was giving all the he was doing all the free association test and all these things, but she was not recovering. So one day one day the Fried saw a dream in which he saw the Irma at the party. एंड इन दैट पार्टी मतलब एकदम उसके दिमाग में एक फ्लैश आया कि पहले जहां से ट्रीटमेंट चल रहा था वहां पर किसी डॉक्टर ने उसे गलत सीरीज लगा दी, मतलब इन्फेक्टेड सीरीज लगा दी. तो वो जो गिल्ट था फ्राइड के अंदर कि मैं व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिकवर द इर्मा, कि मैं तो वो गिल्ट उसके मन से चला गया. तो इसीलिए एक तरीके से इसने मतलब करा कि जो ड्रीम है वो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है. Yes. So dream analysis is basically yes. बेसिकली जब आप सोते हैं ना, when you are in sleep, तो आपका जो ईगो सेंसर है इट इज ईगो सेंसर इज वेरी मच लेस विजिलेंट during when you are sleeping, and your repressed ideas, emotions from the unconscious minds are more likely to appear in your dreams than the waking state. ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी उनकी पूरी बुक है ड्रीम एनालिसिस के ऊपर. अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जब हम स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो हमारे जो रिप्रेस आइडियाज हैं, मोटिव्स हैं ना, वो हमारे सपनों में आते हैं. और किस फॉर्म में आते हैं? बेसिकली इन अ वेरी सिंबॉलिक फॉर्म. So basically in your dreams is more of a mixture of your present and the past wishes. So as a therapist or as a counselor, you have to interpret the symbolic meaning of the client's dream. कि उनका क्या मायने हैं, and how these symbolic forms is connected with the childhood traumas. What childhood traumas or like repressed emotions or motives?
And what about the analysis of resistance? इनकी थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस. उसमें क्या होता है? So basically, in the analysis of resistance, the counselor assists the client dealing with the resistance. What is resistance? See, sometimes what happened, the client may show you resistance in a form of uh, missing the appointment or being late to the counseling session. Sometimes he or she may refuse to recall the dreams. Sometimes and blocking thoughts during the free association. उसको लगता है कि नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं है, बहुत हो गया, मतलब यहाँ आने से या मतलब काउंसलर को कंसल्ट करने से, तो वो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. So the analysis of resistance basically help the counselor to deal with the resistance with the client. So here in this course or in the phase of uh, resistance analysis, you need to, as a client, you need to indicate it or you need to discuss with the client in order to provide a better understanding of the unconscious causes of such a resistance. आप उसको किस तरीके से ज्यादा और बेहतर बना सकते हैं. Another technique is the transference analysis. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक जो आपके क्लाइंट हैं या जो आपके पेशेंट हैं, समटाइम्स ही रिएक्ट टू द थेरेपिस्ट एज दे डिड विद सिग्निफिकेंट अदर्स. और वो सिग्निफिकेंट अदर्स कोई भी हो सकता है, ये वो फादर हो सकते हैं उसके, या मदर हो सकते हैं, या मतलब कोई पार्टनर भी हो सकता है. So this reaction may be in the form of hostility, dependency, sometimes over affection to the therapist. He or she will start showing you. और ये बहुत ज्यादा होता है काउंसलिंग प्रोसेस में कि कभी कभी जो आपके क्लाइंट है वो मतलब आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे. आपको एज अ फादर देखेंगे, आपको एज अ मदर देखेंगे, या हो सकता है एज अ आपको अपना फ्रेंड देखेंगे, एज अ अपना पार्टनर देखेंगे. So basically, this kind of transference of the emotions affect the entire counseling process very significantly. तो इस केस में आप क्या करेंगे बताइए जरा. तो ऐसा कुछ होता है, then what you will do? Any idea? If your client is showing over affection towards you, or maybe like he's reacting as he's reacting with the some significant others. So the resolution of this transference is essential
element in effective psychodynamic cure. So basically, in this psychodynamic therapy, as a therapist, you need to bring the unconscious material into the consciousness and help your client to develop the insight into the genesis of difficult emotional patterns. There's one more technique which is widely used by the psychotherapists, one is that is interpretation. Uh, Interpretation is very much used by the psychodynamic counselors in pointing out or explaining to a greater extent, or sometimes teaching the client in the form of presenting the behavior in dreams, free association, resistance, and the counseling relationship. So the interpretation is very much crucial and grounded in the counselor's assessment of the client's personality as well as his or her behavior. Sigmund Freud also talked about the defense mechanism, which is widely used by the clients in the psychotherapies. क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म, एनी आइडिया? Research, I think, if the people are defensive for themselves, so they are, I think, cut out from others in some or the other way. Okay. So in 1966, Anna Freud concluded that ego defense mechanism are what shield or the protect the individuals from being overpowered by anxiety through denial of events. Although Sigmund Freud talked about some very much significant techniques of defense mechanism like repression, projection, reaction formation, displacement, rationalization, denial. ये सारी टेक्निक्स बताई थी सिगमंड फ्रॉइड ने. Yes, yes. एंड इन साइकोएनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इनसाइट मतलब आपका सेल्फ नॉलेज, हाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड द पर्पस योर own motives and your own behavior. And sometimes you must recognize your ability that you were inappropriate or irrational sometimes. So Freud also talked about the insight counseling. What is insight counseling? So basically insight जो है वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपका, जिसमें कि मतलब it is used in group processes or maybe the individual processes where the client try to make the connection between the new information and the present circumstances.
What about interpersonal counseling? Any idea about interpersonal counseling? Sir, interpersonal is a word which is given by Howard Gardner, inter or intra. Okay. Sorry, interpersonal basically is related to how we understand the other person, but intra means how we understand ourselves. Okay. So basically, this the root of interpersonal approach is, if you study the historical aspects of interpersonal counseling or interpersonal approach, you will find that it was also developed at the time of psychodynamic movement. Adlerian approach, अगर आप पढ़ेंगे Adlerian approach, then you will find how society plays an important role in our interpersonal aspects. एरिक्सन जो है उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है interpersonal aspects of human being. Different psychologists or different therapists have talked about their interpersonal relationships. So basically, interpersonal counseling is majorly used for what? बताइए किन purposes के लिए use होता है interpersonal counseling? Sir, for boosting confidence. Okay, for boosting confidence. For improving relationship with others. Yes, improving relationships with the others. So basically, interpersonal counseling majorly used for the relationship problems, love, like the relationship problems between the partners, between the friends, or between the families, loved ones. Hmm? So in the interpersonal counseling, first of all, you need to identify what the problems is. Problem kya hai? What are the factors which are affecting your client? क्या disputes हैं? Unresolved क्या griefs हैं? What are the interpersonal deficits क्या क्या हैं? So based on the identification of all the problems, then or identified areas, then only you are able to provide him or her interpersonal counseling. Therapies can be used differently, like आप उसमें behavior therapy भी use कर सकते हैं, आप उसमें gestalt therapy भी use कर सकते हैं, उसमें आप psychodynamic therapy भी use कर सकते हैं, but before getting into the therapies, you must aware what is the problem and what are the areas where you have to work. Okay, especially in terms of the relationships. Clear है? Yes, sir. Okay, जब हम बात करते हैं like counseling with children, very young children, then see बच्चों में मेजरली प्रॉब्लम्स आपको पता है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, आपके 21 में था, आपके मेजरली जो चाइल्डहुड इश्यूज हैं आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज के होते हैं या एडीएचडी के होते हैं या आपके ऑटिज्म के होते हैं या समटाइम्स एंजाइटी के भी होते हैं, सेपरेशन एंजाइटी के भी आते हैं, समटाइम्स कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी होते हैं बच्चों में. So as a counselor, first of all, you must aware about all these disorders, neurodevelopmental disorders or childhood disorders. इनके symptoms क्या हैं? What are the different symptoms of learning disability? What are the symptoms of ADHD? What are the symptoms of anxiety or separation anxiety? What is the difference, like the symptoms of behavioral disorders, tic disorders, autism spectrum disorder?
और क्या फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट अबाउट द क्या सिम्टम्स हैं, बट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ दीज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज डिसऑर्डर्स. देन ओनली, जब आपको ये सब चीजें पता होंगी, देन ओनली यू आर एबल टू प्रोवाइड अ बेटर काउंसलिंग. You can, मतलब these the prior knowledge of the disorders, causes, the factors, risk factors, prevalence, or the differential diagnosis, then only you are able to define their world. You can use different methods for counseling, like आप उनके संग play based therapy कर सकते हैं, play therapy कर सकते हैं, आप expressive art therapy कर सकते हैं, आप उनके साथ sometimes behavioral modification भी आप यूज कर सकते हैं, बट वो तभी कर पाएंगे जब आपको सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पता होगा. और एक सब पता कहाँ से चलेगा आपको? एनी आइडिया? आपको डीएसएम पढ़ना पड़ेगा, डीएसएम 5 TR. अच्छा बताओ, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? अब आप ही लोग से पूछते हैं, चलो बताओ. Sir, learning disability is in some part of cognition, some deficient in cognition is happen. Basically, if we talk about those person who is dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, they don't have, they are normal child, their IQ is normal, but there is some part of in cognition या in mind, some part is affected. Like in dyslexia, child is not able to read. जैसे हमने तारे जमीन पे मूवी देखी थी, उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया था, तो उसका कुछ एक ही पार्ट अफेक्ट होता है, बाकी मतलब नॉर्मल हम जैसे ही होते हैं वो बच्चे. अच्छा, एनीबॉडी एल्स? तो आप बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, लर्निंग Well, डिसेबिलिटी. dyslexia can be, I think, dyslexia can be of different types. जो हमने वहां देखा था उसमें मूवी में, वो एक टाइप था डिसलेक्सिया. कई बार तो डिसलेक्सिया के स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी अच्छा कर जाते हैं, काफी दे डू वेरी गुड इन देयर लाइफ, बिकॉज वो वैसे डिसलेक्सिया उनका, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने आई हैव सीन somebody is telling, जो साइकोलॉजिस्ट थी, कि डिसलेक्सिया एक टाइम के बाद कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनका जैसे जैसे एज ज्यादा होती है वो ठीक हो जाता है. अब आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दे से कि वो ठीक हो जाता है. हाँ Well, ठीक है. according to me, learning disability is a problem with one particular type of ability of a person. It can be spoken, written, understanding, or performing any task related to only one particular, I think, one particular area of a person. सो बेसिकली आपको जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से बोलते हैं, इट इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो कि आपके स्कूल एज में स्टार्ट होता है. although it is like very difficult to recognize until the later, when the child is reach at the age of 7 years or 8 years. So basically in this learning disability, So we can say they are developmental disorders. it is a developmental disorder. Okay, sir. So इसमें ongoing problems होती हैं, जैसे इसमें academic skills learning में difficulty होती है. स्पेशली जो मेजरली जो प्रॉब्लम है वो रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. और ये सिर्फ, it is, this disorder is not simply the result of lack of instructions or poor instructions. As I mentioned, it is a developmental disorder. अगर इसको Well, मैं एक एक मेरा क्वेरी है.
सर मेरा ये पर्सनल भी है थोड़ा सा। मेरी डॉटर को ये बोला था डॉक्टर ने, नाउ तो शी इज ग्रोन अप एंड वो बहुत पहले की बात है, लाइक इन क्लास प्रेप और क्लास 1, मतलब जब 6-7 साल का बच्चा होता है, तो उस टाइम वो बेड वेटिंग करती थी और बहुत ज्यादा मतलब इरेज कर करके वो फाड़ देती थी अपनी नोटबुक को, और उल्टा बहुत बार लिखने में प्रॉब्लम, उल्टा लिखती थी और ये सब चीजें थी। और बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा था, और थम्स अप करती थी। तो मुझे जो स्कूल की साइकोलॉजिस्ट थी उसने कहा था कि आपकी डॉटर को डिसलेक्सिया है, और शायद ये प्रॉब्लम आगे तक चले और वो ना कर पाए, और कुछ कह नहीं सकते, दैट कैन बी मे बी क्योर्ड। अब मेरे को अभी तक वो क्वेश्चन है कि क्या उसको डिसलेक्सिया था या डिसलेक्सिया है, बिकॉज वो उल्टे हाथ से लिखती है, दैट इज देयर, बट शी इज बिकम अ डॉक्टर नाउ, तो शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट एमडी, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्या वो डिसलेक्सिया था या नहीं था, ये क्वेश्चन अभी तक मेरे माइंड में है। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स अलग हैं, दैट इज नॉट अ डिसलेक्सिया। ओके, तब उसने मुझे साइकोलॉजिस्ट ने, जो स्कूल की एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थी, उसने यही कहा था कि आपकी डॉटर को डिसलेक्सिया है। सी डिसलेक्सिया क्या है, आप लोग क्या समझते हैं डिसलेक्सिया, मुझे बताइए जरा। So inability of a person to that who could not write things properly the way they have to be written. ओके चलो, राइटिंग की प्रॉब्लम है, और कुछ समझता है डिसलेक्सिया को कुछ? Associated with understanding also. If you can't understand, you won't write it properly. So I think both things go hand in hand. अच्छा चलो ठीक है, मान लो। कई बार रीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसे कि डी है तो मतलब बच्चा उल्टा अक्षर पढ़ने लग जाता है, सी को डी, इस तरीके से ई, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। Sir, this is basically a language understanding disorder where you can have problem with speaking, understanding, and writing. चलो मैं आप सबको बता देता हूँ, डिसलेक्सिया इज बेसिकली लर्निंग डिफिकल्टी which is very much related to the word recognition, decoding and spelling. Sometimes क्या होता है, when the child is having problem with the written expression, okay, or might found difficulty with the spelling, grammar, punctuation, ठीक है, उसको स्पेलिंग, वो उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, सही से लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, क्लियरली अपने वर्ड्स को बिठा नहीं पा रहा है, या वो सही से चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, the child is found difficulty in handwriting, that is called dysgraphia. Another एक और प्रॉब्लम है जिसे हम डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। डिस्कैल्कुलिया मीन्स the child is having problem with the number sense, memorization of mathematical calculations or mathematical reasoning or problem solving, उसे हम डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चा प्री स्कूल में होता है या प्री स्कूल ईयर्स में होता है, तो when the child is having learning disorder, often they experience in delays in attention or maybe the language or motor skills, उसको थोड़ा सा सीखने में समय लगता है, ठीक है, ये आपका लर्निंग डिसऑर्डर है। क्लियर है क्या है? अब इसके भी बहुत मतलब इसके अलग अलग सीवियरिटी है, स्पेक्ट्रम है, लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और इसकी कोमोर्बिडिटी भी है। जरूरी नहीं, जो आप जिस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, तो आप देखेंगे कि दोस चिल्ड्रन आर हायर or greater risk of developing some other problems also, like attention deficit or maybe hyper ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. तो मैम जो केस आप अपना बता रहे थे अपने बच्चे का, उसको हो सकता है कुछ रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम रही हो, अदरवाइज
है ना, उसके साथ साथ आपको बहुत बच्ची बहुत इम्पल्सिव रहेगी। ओके सर। डिसलेक्सिया में कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग का ही प्रॉब्लम होता है, समझने का प्रॉब्लम होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेलिंग है। डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया, व्हाट विल बी द डिफरेंस सर? देखो, dyslexia is a problem which is related to the word recognition, वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में, उसको डिकोड करने में, या उसकी स्पेलिंग्स को डिकोड करने में, उसका मीनिंग डिकोड करने में प्रॉब्लम होना। ओके। डिसग्राफिया जो है वो प्रॉब्लम विद द रिटन एक्सप्रेशंस है। रिटन एक्सप्रेशन, चाहे फिर वो आपके ग्रामर का हो, चाहे फिर वो पंचुएशन का हो, या मतलब ऑर्गेनाइजिंग दी वर्ड सेंटेंसेस उसका हो, बेसिकली हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम इन हैंड राइटिंग, उसको हम डिसग्राफिया बोलते हैं। मीन्स डिसलेक्सिया में जरूरी नहीं है कि राइटिंग इशू हो सकता है सिर्फ रीडिंग इशू हो। एम आई राइट सर? हाँ, रीडिंग का ही इशू होता है, राइटिंग का इशू डिसग्राफिया में होता है। ओके ओके। ठीक है। एडीएचडी क्या होता है बताइए जरा। क्या चीज सर, एक बार रिपीट करेंगे? एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाँ, डिसऑर्डर या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, राइट। So basically, this disorder is also characterized by the hyperactivity or attention deficit or impulsivity. So basically, इस डिसऑर्डर में जो सबसे मेजर जो सिम्टम है, वो पहला सिम्टम आपका हाइपर एक्टिविटी का है, दूसरा आपका अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और तीसरा आपका इम्पल्सिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जब हम बात करते हैं आपका इन अटेंशन की, अब इन अटेंशन से क्या समझते हैं? जो किसी चीज में अटेंशन एक टाइम पे अटेंशन अपनी नहीं रख पाते हैं, नहीं रख पाते, राइट। डाइवर्ट हो जाती है अटेंशन बहुत जल्दी। राइट, सो समटाइम्स आपने देखा होगा सम चिल्ड्रन आर फेल टू गिव अ वेरी क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स, sometimes sometimes he or she makes careless mistakes in school work और सब अदर एक्टिविटीज जो भी उसको मिलती हैं बच्चों को। और इसमें मतलब कभी कभी बच्चे जो है वो अपनी अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर या किसी भी एक्टिविटी के ऊपर। कभी कभी आपने देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो है वो सुनते ही नहीं है, आप उनको डायरेक्टली कितना बोलिए, है ना, वो नहीं सुनेंगे आप, वो अटेंशन होल्ड ही नहीं कर पाते उतना। Sometimes they don't follow the instructions. Sometimes they are having difficulty in organizing tasks or activities. They can be like very easily distracted by some extraneous stimuli. और कभी कभी वो लोग अपनी जो डेली एक्टिविटीज उनको भूल भी जाते हैं, उन्हें क्या करना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम, ये सिम्टम्स हैं, बेसिकली दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन अटेंशन प्रॉब्लम। और अगर ये बच्चे के अंदर ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, और या मतलब से बच्चे में सिस्टम ये सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं कि आप 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हो, 6 महीने से ज्यादा, देन यू नीड टू शो दी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर दी असेसमेंट। अब इसी की दूसरा पार्ट है आप जिसको हम हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी बोलते हैं। उसके भी हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या होता है बताओ। कुछ बच्चे देखे होंगे आपने क्लासरूम में जो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, घर में एक जगह टिक ही नहीं सकते। बच्चा क्लास में बैठा है तो एक अभी एक सीट पे, फिर दूसरी सीट पे, फिर तीसरी सीट पे,
कभी जी सर, हाँ बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो एक जगह बैठ के टिक के बैठ नहीं पाते हैं, उनको नहीं बैठ पाते हैं। उनको बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है कि आप इधर, ये आपकी सीट है, दिस इज योर सीट, सिट हियर। राइट, वो वो हमेशा एज के मतलब साथ साथ थोड़ा चेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग जब आती है वो, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ज्यादा होती है। वो हमेशा मतलब ऑन द गो स्टेट में रहते हैं, और कभी कभी तो बहुत मतलब वो लोग बहुत ज्यादा बोलते भी हैं। ये मतलब ये सब जो सिम्टम्स है वो हाइपर एक्टिविटी के हैं। इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी क्या होती है कि कभी कभी वो बच्चे मतलब अपना वेट, अपने टर्न आने का वेट ही नहीं करते हैं। अगर आपने उससे कुछ पूछा, मतलब पूछने से क्वेश्चन खत्म होगा उससे पहले वो जवाब, उनका जवाब तैयार रहेगा। ये सारे सिम्टम्स हैं, बट ये सिम्टम्स जो है वो आपके 6 महीने तक परसिस्ट मतलब सस्टेन होने चाहिए। इफ दीस सिम्टम्स आर सस्टेनिंग फॉर एटलीस्ट 6 months or more than 6 months, then you have to consult a clinical psychologist for the assessment and for the therapies. And what about autism सर spectrum? कुछ एक मेरा डाउट था सर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो अगर हम वो इंस्ट्रक्शन एक ही गो में बोल देते हैं, या मतलब उनको पढ़ के भी वो एक ही गो में पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आती, उनको तोड़ तोड़ के इंस्ट्रक्शन बतानी पड़ती है, वो किस टाइप का डिसऑर्डर होता है? वो देखो लोगोस पे आता है, आपका क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में। ओके ओके, थैंक यू सर। व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है? Sir, autism is a neurological disorder. It affects those part of brain which is related to socialization and communication. ओके, In autism, child show eclolia behavior, repeat same activity again and again. ओके, व्हाई वी कॉल स्पेक्ट्रम, मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, क्योंकि अभी ये DSM-5 में ही वर्ड यूज हुआ है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम टर्म यूज किया गया है। सर, ऑटिज्म में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। जैसे ऑटिज्म में अगर हम देखते हैं, मतलब ऑटिज्म से एक तो चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर से भी हो सकता है, PSS, मतलब अगर बच्चा 7 साल के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है। या जैसे रेट सिंड्रोम होता है जो मेनली फाउंड इन गर्ल्स, इन रेट सिंड्रोम मेनली फाउंड इन गर्ल्स, और जो और भी इसके मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इस वजह से इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। से ये आपने एक चीज तो ठीक बोला कि इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बेसिकली इट इज अ कंडीशन related to the brain development. So यस सर। basically, which impact the how a child perceive and socialize with others. जब उसके परसेप्शन में ये प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली इट विल कॉज अ प्रॉब्लम इन social interaction and communication. And this disorder is very much limited and repetitive behavioral patterns. और स्पेक्ट्रम, इसीलिए स्पेक्ट्रम का मतलब ही यही होता है कि to the wide range of symptoms and severity. पहले ऑटिज्म अपने आप में एक डिसऑर्डर था, बट नाउ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जब आर्टिकल ये सब का इसमें आया, DSM-5 में आया, तो ऑटिज्म से या ऑटिज्म जैसी और भी जो प्रॉब्लम्स थी उन सब प्रॉब्लम्स को एक ही इसमें क्लब कर दिया गया। जैसे कि पहले आपका ये था, एस्पर्जर सिंड्रोम था, चाइल्डहुड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर था, जिसे हम हेलर सिंड्रोम भी बोलते हैं, या डिस इंटीग्रेटिव साइकोसिस भी बोलते हैं, या वो था अनस्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स था। तो उन सारे डिसऑर्डर्स को क्लब करके एक नया ब्रांच बनाई गई जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। So basically, this disorder is a problem of socialization and communication, जो कि अर्ली चाइल्डहुड years में स्टार्ट होता है, और इवेंचुअली इट कॉज प्रॉब्लम्स इन द सोशल फंक्शनिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, याद रहेगा। तो बेसिकली आपको इन सब के अगर ये सब पढ़ने हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है,
तो आई कैन फॉरवर्ड DSM 5 TRP कॉपी, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्लीज फॉरवर्ड। हाँ, और बेसिकली जब हम बात करते हैं बच्चों के साथ थेरेपीज की, सो मेजर जो थेरेपीज है बच्चों के साथ, वो आपके प्ले बेस्ड, जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो मतलब देयर आर सम आर्ट बेस्ड थेरेपीज, सम आर लाइक प्ले बेस्ड थेरेपीज, ड्रामेटाइजेशन, so different therapies can be used while working with the children. ठीक है, अब इन थेरेपीज को हम आगे पढ़ेंगे, आपके इसमें आगे है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए ये आपका फर्स्ट मॉडल काफी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल आपका शायद दूसरी थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, कोई और थेरेपी, वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है सर। सर एक क्वेरी था। हाँ हाँ सर दिस इज रिगार्डिंग जो अभी एक क्लास हमारा फेस टू फेस होना है सर, इन दिन 5th में और 19 में को जो प्लान है सर। हम्म सर इफ एनी